Is something brewing in Punjab? Because Punjab Congress clearly is at it. They are consistently claiming, reiterating this time, that Aam Aadmi Party government in Punjab is going to fall. Remember, AAP as government is now only in Punjab. Punjab Congress's Pratap Singh Bajwa again saying that I say that with confidence, that 32 Aam Aadmi Party MLAs are going to jump the ship. We are in touch. And Aam Aadmi Party, of course, remember, realizing at this point that they could be sensing trouble, at least the kind of rumour-mongering speculation that's happening. Hits back says, looks like Bajwa is ready to join the BJP, challenging Pratap Singh Bajwa to prove his charges. Let's listen in first to what Bajwa has to say and what Aam Aadmi Party's response to that is. हमारा प्रोग्राम ये गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना नहीं, इनके एमएलए बहुत अच्छी तरह समझते हैं हमारा फ्यूचर नहीं। ये एडवांस बुकिंग जैसे दिलजीत दोसांझ के शो की, अगले साल के शो की पहले एडवांस बुकिंग होती है। दे वांट टू एडवांस, वो खुद ही आ रहे हैं कि जी हमें कांग्रेस में लो। तो हमने कहा जब टाइम आएगा तभी लेंगे ना भाई। अब जब शो होगा तभी टिकटें खुलेगी, जब इलेक्शंस कॉल होगी हम बुला लेंगे। नहीं, मैंने नहीं दिया, मैंने अपने संपर्क वाले बताया। मैंने कहा कि बहुत सारे के साथ सेंट्रल एजेंसीज इन टच होने की कोशिश कर रही है और भगवंत मान मैंने कहा था बिट्टू के जरिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ इन टच है और बहुत कुछ चल रहा है। आपको नजर नहीं आ रहा, आपको नजर आएगा, आप फिर मानोगे कि बाजवा साहब जो आप कहते हो सच है। जैसा कि बाजवा साहब आजकल बिल्कुल फ्री हैं, ना उनको लोग पूछते ना उनको कोई कांग्रेस पार्टी में पूछते हैं। सो इस करके मीडिया में आने के लिए वो ऐसी बार बार बेतुकी बयानबाजी जो है वो कर देते हैं मजाकिया अंदाज में। बाजवा साहब, जब आपके सगे छोटे भाई फतेह जंग सिंह बाजवा कांग्रेस छोड़ के, जिनके साथ आप एक ही घर में रहते हो, अगर जब वो बीजेपी में गए तो वो आपके टच में नहीं थे। राहुल गांधी जी से कहना चाहूंगा कि आप प्रताप बाजवा जी से पूछिए कि पिछले दिनों वो बेंगलोर क्या करने गए थे, पिछले दिनों में कौन कौन से बीजेपी के लीडर्स को वो मिले हैं। इसकी जानकारी राहुल गांधी जी को जरूर अपने लेवल पे करा लेनी चाहिए। My colleague Asim Bassi joins me for the latest on that. Asim, good morning, because this is one state that Aam Aadmi Party would not want to let go of. But I'm curious here, has Bajwa given any evidence? How is he saying? Because it's a settled government in Punjab of the Aam Aadmi Party. Is there really a rift? What are you picking up on the details? Ever since the Delhi results have come in, Aam Aadmi Party has faced a heavy defeat. Pratap Singh Bajwa, who is also the leader of opposition, has repeatedly said all this, that he has around 30 Aam Aadmi Party MLAs in touch with him. Well, what is the reality is different thing, but definitely Bajwa yesterday said openly that there are 32 MLAs and they are making advance bookings for Congress Party for the 2027 polls. Although Aam Aadmi Party has hit back, saying that Bajwa himself is packing his bags for BJP, has had closed-door meetings with BJP leaders in Bangalore, which Bajwa has denied. But mathematically, if we talk about the seat share and seat things, Aam Aadmi Party is in a very, very strong position. Out of the House of 117, Aam Aadmi Party has 93 MLAs. So there's no threat or nothing like that. But this tiff between Bajwa and Aam Aadmi Party is continuous. And is it also about now Bhagwant Mann and as much Arvind Kejriwal's leadership qualities to keep the flock together? Because perhaps Pratap Singh Bajwa realizes that in politics there are no permanent friends or foes.